Today is a moment to salute the efforts of each and every one of them, hundreds of them who've been involved silently, anonymous faces, and from the rat mining workers who've gone right down the tunnel manually digging, to the NDRF, the other teams that have been involved in this operation. It's been a remarkable united effort at bringing the workers on. Let's bring you the headlines. All 41 workers extricated from the Uttarkashi tunnel. Nearly a 400-hour harrowing rescue operation comes to a successful end. Officials say all rescued workers are safe and healthy. Workers to spend the night at the hospital for wellness checks. Workers' families celebrate. The other big headline, high voltage campaigning ends in Telangana. India's youngest state will vote in the next 48 hours on 30th November. Israel claims Hamas violated the 6-day ceasefire, alleges 3 Hamas bombs detonated next to Israeli troops in Gaza. But today is a day to celebrate the light that has finally emerged at the end of a dark tunnel. All 41 workers who were trapped in the tunnel in Silkyara have been rescued after a heroic operation that has lasted more than 400 hours. The mission is 100% successful. 41 workers being pulled out one by one in a total time of 1 hour 33 minutes. All workers taken to the Chinyalu Government Hospital. Prime Minister Modi has responded, saluted the workers, their courage, their patience, and that of the family, called it a joyous moment for all. Let's go straight across to VK Singh, who's been tracking this for the last couple of days. VK, it is a moment to celebrate. Presumably, that is the mood also on the ground. It's a celebration of sorts, Rajdeep, here on ground zero. A lot of euphoria, hysteria, sloganeering, chanting, and you know the unsung heroes, the warriors who stood their ground. We spoke to a lot of labourers, the other half of the team that was left outside. They had harrowing moments. There were drivers, there were electricians who toiled in and day out, and today it's Diwali celebration for them. I can tell you, it's a moment of reckoning, and Syria Joseph is all smiles. He's from Squadron. The entire team from Bengaluru, they were flying the drones, and you got the better view, and then finally you all triumphed the entire struggle. Yeah, it was. We are very glad that the 41 people are come out, and it was well coordinated effort. We had the entire team. We had the Indian Army, the BRO, the NDR. Everybody was there. We were glad to be part of it. I know and that the challenges was something. We fly drones inside the tunnels, but the real heroes are the ones who went into that hole, and they could get mad miners. And there's no other moment. They were the superheroes, ordinary people scripting history there, and finally you all are smiling. This is my team. They are the heroes. Cheers. Finally they came out. Yeah, finally we are all team's effort and many people like बहुत लोगों का इसमें हाथ था और हम बहुत खुश है कि वो बाहर आ गए हैं इतनी बहुत दिनों के बाद. So, we are very happy that they had such reliable people like you all who really worked, and hats off. India Today salutes all the unsung heroes who worked behind the scenes. Yeah, but our biggest win is the 41 people. That's our trophy, yes. That's your trophy that you take back. And perhaps it also united India, north, south, east and west. Yeah. India is the It united the world. And we thank for the press. Yes, we are very happy that 41 people came out, and we are glad that we are a part of that successful mission. Was it difficult flying the drone inside? It's a tunnel and it could hit. This is technology. The first time we are the ones who fly drones inside the tunnels, and then we do it is not only the people, 41 people. There is the safety of the rescue team also who need to work with great efforts to bring the people out as quick as possible. So we used to we gather a lot of data. We flies in the dark in hazardous areas,
and we also fly with radar technology, latest technology. So technology and everything worked. People, everybody was working like compassionate robots. So it was just done. It was an amalgamation of technology and the humongous mammoth effort, and perhaps even they underlining the fact, Rajdeep, that the rat miners were the ones who actually were won the man of the match trophy here. Clearly, winning the entire day for the strapped miners. Tell us a little bit more about these rat hole miners. As you said, they are the superheroes. And I think the nation needs to applaud them, salute them. Many of them came from Jhansi, am I correct? And how did they get involved in this operation at the last stage, manually drilling down to the very last meter? Right, Rajdeep, when the entire news of the auger machine came, that the auger machine had actually broken down and several parts were stuck in the tunnel, that was actually a bit of a dismay. And then, the rat miners came into the picture. I remember that they were the ones who said that this is not going to be a big challenge. We are going to do it. And they said that they work not only in a 800 pipe, but a more narrower one that is 600 So that really meant that they really boosted the morale of the entire team. They had their protective gears, and then they worked arduously. There were several hurdles because they had to use gas cutters, jam hackers, and also laser beams to cut the metal. It was not only about the debris. So a combination of sorts. This was a challenge for them, and we managed to speak to a couple of them where they said that we had to do it lying down, but considering that our brethren were stuck on the other side, we really thought we have to do it. And at 1 p.m. they said that they heard the first sound or echo from the other side of sloganeering and cheering, and that's what got them going. So the poorest of the poor, they here were stuck on the other side, and they showed immense stealth and immense determination. And on the other side, the rat miners, who were perhaps their brethren, their counterparts, perhaps in another role, they stepped in. We are learning that the Chief Minister is coming, Rajdeep, for a press briefing. We had told India Today first that when I asked him what's the update, at about 1 hour from now, he said he waved and smiled, and that was the first sign that the operation had worked out successfully. Perhaps we'll hear more about the entire details and contours of the rescue operation in a short while from now. Let's just for a moment hear from those rat hole miners, because remember, rat hole mining has been banned by the National Green Tribunal because it is hazardous. Many children, especially in Meghalaya, are sent down coal mines, but today it was their expertise that won the day. Maushmi spoke to them. Listen into what they had to say. We are introducing you and the country to the rat miners who have just come out, and you can hear a lot of sloganeering. This is a moment that they were also looking forward to. कितना मुश्किल था, आप लोग कितने लोग अंदर गए और सब पूरा क्लियर कर दिया आप लोगों ने? कितना मुश्किल? बहुत ज्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि 41 आदमी थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। सबसे मेन मुद्दा ये था, पर यह है कि सभी लोग सुरक्षित है। हमारे हिसाब से तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू था वो यही हुआ, जिसमें सभी लोग सुरक्षित निकले। यही सबसे बड़ी बात थी। चर्चा हो रही थी रैट माइनर्स की 800 का पाइप था, संकरा रास्ता था, और सबसे पहले आपको कब आवाज आई वहां से, उस छोर से, कि हाँ हम पहुंच गए? देखिए, शुरू नहीं, वो तो लगातार ही आवाज आ रही थी। जैसे नहीं, सब लोग, जाहिर सी बात है कि वही बोल रहे थे कि जल्दी करिए आप भी, और आप लोग भी थक रहे होंगे, लगे हुए हैं, पर फिर भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कीजिए। और आवाज तो खैर 10 मीटर के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे और ज्यादा हमारा भी उत्साह बढ़ रहा था, और उधर से भी लगातार बात हो रही थी, तो संपर्क में थे सभी लोग। जी 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 जी। अच्छा, कब मुश्किलें आई? मेटल भी आया होगा, क्या क्या उपकरण आपने इस्तेमाल किए, और क्या आप लोग में से किसी की तबीयत खराब हुई? क्योंकि लंबे घंटों तक आप लोग ने नहीं, देखिए, तबीयत
तो खराब होना लाजमी था, पर ऐसा किसी ने भी फील नहीं होने दिया, क्योंकि जोश इतना था कि एक बार बाहर निकालना है, वही सबसे ज्यादा जरूरी था। और जब हमारी जो रोवर मशीन है वो अंदर खराब हुई, वो एक ऐसा पार्ट था कि थोड़ा मुश्किल रहा। 35 से 40 घंटे जो लगे उस मशीन को काटने में, वो थोड़ा बीच में एक पैच ऐसा था। बाकी तो जितना काम होना चाहिए उस हिसाब से हुआ है। आपने भी मलबा क्लियर किया, इनके जूनियर हैं, आप पूरी टीम को लीड कर रहे थे? नहीं, सभी लोग थे, हम भी लगे हुए थे, दूसरी टीम भी लगी हुई थी, सभी आदमी थे, ऐसा नहीं बोल सकते इसमें कोई एक ही आदमी, सब लोग लगे हुए थे, सबका ही था ये। जी बिल्कुल। आप बताइए कि कभी इस तरह की स्थिति देखी है आपने? खुद यंग है, कितना मुश्किल था? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा, पहली बार है। क्या सुनाई दिया उस छोर से? नारेबाजी सुनाई कि नारेबाजी हो? 1 बजे के आसपास 1-2 के बीच में ही आवाज आ गई थी, उसी टाइम जयकारी मार दिए। हाँ, जयकारा उसी टाइम मार दिए थे हम लोग ना, कि हो गया पाइप पार जी, पाइप थ्रू हो गई। लेकिन उस टाइम कुछ मग बच गया था ना हल्की सी, तो फिर बाद में थोड़ा पाइप 3 मीटर का काटा गया, फिर उसको ज्वाइंट की गई। वेल्डिंग मारने में लेट हुआ है, तब तो उसी टाइम निकल देना था, 3-4 बजे का। जल्दी एक सवाल, क्या थकान महसूस हो रही है? क्योंकि पूरा देश जानना चाह रहा है कि कौन थे रैट माइनर्स, कितना मुश्किल। थकान बिल्कुल भी थकान नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं, तो जोश इतना है कि बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जुड़े हुए थे, सभी प्रशासन और सभी कंपनियां, सभी लोगों ने बहुत। टीम थी, कितने as you can see, the pictures that we are getting at the moment are of a press conference about to be taken by Pushkar Dhami, Chief Minister of Uttarakhand, and General VK Singh, who was the Union Minister deputed by the Prime Minister's office to be there on the spot, the former Army Chief and Union Minister. Let's just listen in. लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संघर्ष करना था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा। और हमारे जनरल VK सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं। और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम
और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर, उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की सभी चिंता तो नहीं हो रही थी। स्वयं ही आकर शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई समस्या लगा। देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की वो चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या अब जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले। तो ये हाँ एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल नहीं। जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे, और उनका आशीर्वाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी,
उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई। क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान ठीक है। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पे अगर ऑपरेशंस की बात करें? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? इन टर्म्स ऑफ देखिए, अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट बात कंप्लीट कर लेंगे। जी सर बोलिए। जी सर तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आप थे? आपका हो गया। आप भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा बाबा बागनाथ की कृपा से। गाँव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में रैट माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? नहीं, सभी सर समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। इसको सफल करना है। एक मिनट somebody else is there। आप कोई और है? सर आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में। और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे की एक मिनट इनको पूछ लेने दे भाई। ऑपरेशन था उसका मैग्नीट्यूड हम समझना चाह रहे थे सर, मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट जो भी लगी या वर्कर, और दूसरा क्या एयरलिफ्ट करने की बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए। अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है। सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर में नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, हाँ, एक मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए, कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्कफोर्स। अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि
ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना है, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। Pushkar Dhami, who is the Chief Minister of Uttarakhand, legitimately sharing in that moment with General VK Singh next to him, giving details of how the government's various agencies have worked together for 17 days to ensure that the laborers were brought out safely. Particular mention there once again of the rat hole miners, including those who've been going down the drain pipes at the Delhi Jal Board as well as from Gorakhpur, some of them from Jhansi. It has been a true team effort. Let's get in more voices. Raghav Chandra, former Chairman, National Highway Authority of India, joins me. Professor YP Sundrial, geologist. Dr. Anjal Prakash, Research Director, Bharati Institute of Public Policy at ISB, with us. Appreciate all of you joining us. Raghav Chandra, moment to celebrate for now, and perhaps also a few learnings to ensure that we do not have to go through this again. Yes, this is indeed a moment of great relief, satisfaction and joy for all of us that these poor workers have been rescued and that there have been no casualties and that all of them are looking fairly healthy and safe. In terms of, there's also a great feeling that not just for cricket, but for something as human as, this, the entire nation can unite and all agencies can work together wholeheartedly, seamlessly, and they have done such a fantastic job in rescuing the workers. Professor YP Sundrial, so it's really a matter of great satisfaction. Professor YP Sundrial, your first reactions. The workers are safe. It's a moment of relief, as was just pointed out. But is it also a moment for us to look at the implications to ensure that tunnels, those constructing tunnels, are kept in as safe conditions as possible? Time for a safety audit? Yes. First of all, trapped workers are out now. So this is a great movement for all. And hats off to red miners and other members of the rescue team who were continually day and night putting their all efforts to bring the trapped workers out. Yes. Now, this is the time when government will think for the safety audit, and I was just listening Chief Minister of Uttarakhand, and I got one message from the central government also. They are ready for the safety audit of all the tunnels being constructed for the railway track from Rishikesh to Karnaprayag, and certainly they will audit that how and why this tunnel was collapsed. Dr. Anjal Prakash, Research Director, Bharati Institute of Public Policy, your first reactions to what has been a remarkable job, a remarkable effort by the rescue teams coming together? Yeah, thanks, Rajdeep. No, definitely it's a moment of joy for all of us who have been watching this very closely for 17 days, and I think this is one of the best coordinated effort that I could ever see in the recent history, where different organizations, people, 2,000 people on the ground, and the local administration has come together to rescue 41 workers. Each and every worker has been rescued without any scratch on their body, and that is something that is remarkable. I must say that this is a moment in history for all of us. But having said this, I think this is also time for us to think about the kind of havoc that has been created in the Himalayas, which I have been warning day in and day out, and I think that's something that we must discuss at this moment as we celebrate the joyful occasion for all of us. So it's a moment of celebration, it's a moment of introspection, but just for a moment to Raghav Chandra, to just look at what it takes to bring various organizations of the government together. I think that is
something that the government should feel at least satisfied that they've got various government agencies working in tandem. And we are seeing this now time and again, whether it's cyclones, whether it's tunnel rescue operations. We seem to be, as a nation, far better equipped to handle disasters than we ever were. Mr. Chandra, can you hear me? Okay, we'll try and come back to Mr. Chandra in a moment, but you want to take that, Dr. Anjal Prakash, the fact that, you know, the sense of satisfaction today comes from the fact that various government organizations in a crisis can work together, state government, centers government, and civil society. The Delhi Jal Board sent some of its workers who have a track record of going down deep drains. We had teams from Gorakhpur, we had rat miners from Jhansi, all of them coming together along with the NDRF and other government rescue teams and international experts. No, absolutely. There's no two. No, absolutely, there's no two way that this is one of the the best coordinated effort that I have seen, as I said, in the recent time. And post-disaster also, as your question was initially, we have been doing very well. But my pitch is not about the post-disaster, because my pitch is about what happens when the disaster strikes. You know, what is that we are doing to prevent this disaster for the things. And let me just take this moment also to say and warn that these kind of disasters are going to happen much more in the future if we create the similar kind of a situation as we are in. And I must warn that you know, this year you have seen what has happened because of climate change. Himachal Pradesh has gone through a very serious problem. Similar problems Uttarakhand has been facing. We are living in a very fragile ecosystem. Climate change is a force multiplier for all of us. We must rethink and relook at the projects that we are constructing in the Himalayas. That is what I would put forward. Apart from the jubilation, the joy that I have, I must also warn that this is something to be looked for. We must re-evaluate these projects because the projects have been conceptualized much before the climate change has stricken to all of us, and we must re-evaluate. We must look at the safety measures that has been. Right. I think there has been a slack in some of those technical aspect. We must look at that as well. Mr. Chandra, as a former Director, National Highways Authority of India, while we celebrate the manner in which various government and civil society rescue workers have come together in this rescue operation, should we also be looking at perhaps how do we avoid such disasters? Will there be enough focus on that? Do you really believe that the government will now also have to look at how do we ensure disaster prevention? Yes, indeed, that's something absolutely necessary, and we must draw a very healthy balance between our development aspirations and our environmental protection and safeguarding, especially in an era of climate change. That having been said, it is extremely important to ensure that the requisite technical evaluations are done in advance in an appropriate manner. And one of the biggest shortcomings normally is that the detailed project reports, when such projects are launched, are not undertaken correctly. And, you know, the consultants who are working on the DPRs, they usually cut corners and they don't do the kind of diligence that they ought to do, as a result of which the project itself is undertaken in a somewhat slipshod manner and justice is not done. Let me, though, for a moment just press the pause button at the moment. Sure. While we look into the future, let me focus on the present. I'll just stop you, Mr. Chandra, for a moment, because this is a moment to salute the heroes. We'll also go to the families of the victims, of the families who were anxiously waiting for their loved ones to return. But first, let's take a look at the heroes, because India Today's cameras were rolling non-stop for all 17 days since the rescue operation first began at the Uttarkashi tunnel. Now that all 41 workers have been rescued, it's time to pay tribute to the heroes behind this rescue operation. Multiple organizations and individuals involved. Take a look.
boring through horizontally, drilling from the summit down. Formidable mountains above, resilient boulders below. A team of manual diggers skilled in rat mining entered the final phase of rescue operations. Meet the dedicated individuals who supervised and strategized these complex efforts for the past 17 days without a break. Atul Karwal, the head of India's premier disaster response force. We are hopeful that it will finish early. If no other obstacle comes in the way, we should be able to rescue them. So I admire their courage that they have stuck it out for so long without losing their heads. And now they must be hopeful as well that this will finish soon for them. Lieutenant General Raghu Srinivasan, the head of the Border Roads Organization, involved in constructing approach roads for vertical drilling. Lieutenant General Harpal Singh, the former engineer-in-chief of the Indian Army. मैनुअल जो कि हमारे पार्टीज हैं, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो प्लस आर्मी की सहायता से उसको आस्ते आस्ते जाएंगे. शॉर्ट तरीका है ये आगे बढ़ने का और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो जाए. Mahmood Ahmed, the head of the Highway Infra Body, and Lieutenant General Ata Hasnain, member of the National Disaster Management Authority. As far as locations are concerned, there is no change since yesterday except that we have progressed about 10 meters through the option we adopted of manual digging. Now that has been fairly successful. We hope that very soon there should be a breakthrough. Another 1 meter करने के बाद वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौती भरा होगा और फिर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं रेगुलरली. हम देख रहे हैं जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे साइमल्टेनियसली और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते रहें. International tunneling experts Arnold Dix and Chris Cooper supervising the operations. Still mining, we've got a couple more meters to go. The going's quite easy. I'm expecting to see some results. So how many meters left? About 2 to 3 meters. Very big time for everybody. We're doing everything we can. 41 men home safe, no one hurt, and I'm feeling good. Monitoring the progress, meter by meter, strategizing and re-strategizing in the face of setbacks. Their unwavering dedication and expertise, the driving force behind this relentless pursuit of rescue. Bureau Report, India Today. Raghav Chandra, former chairman, National Highways Authority of India. How difficult is that to get these various organizations within the government to work in sync and to get individuals, thousands of them, to work together? Does that in a way show that particularly as a country we've arrived when it comes to, I mentioned earlier, whether it's cyclone disaster relief or indeed a rescue operation like this, India can do it? Okay, we're going to try and get that audio back, but I think that is really one of the key elements of what we've been able to achieve. Remember, number of the families have been praying for days together, waiting for this moment. It's been a difficult Diwali for them, and they've really had to exhaust themselves simply by remaining patient and resilient. Just think of all those 41 workers down there for 17 days, not knowing what the future will bring. It is these workers who really have been heroes in a way, because their families have not allowed their fortitude to ever waver. And the heroes, as I keep maintaining, are the rat hole miners. They were the ones who created that escape passage during the last leg after heavy machines failed to cut through the debris in the last 10 meters. Who are these rat miners? Many of them work in the most hazardous conditions without any protection. It was the poorest of the poor, my friends, who rescued the poor. How did they do it? Take a look. Unyielding debris forces colossal machines to retreat. Human hands take charge.
an antiquated method of coal mining, particularly in the remote northeast. Now utilized in one of the most challenging tunnel rescue operations in mountainous terrain. A team of rat miners has taken on the task, constructing a passage for the 41 trapped workers to crawl through. The method involves taking small shafts in earth, often only wide enough for a single miner to descend at a time. ये बताइए, जो प्रोसेस है पूरा, आप लोगों का अंदर जाएंगे, बड़ा कठिन परिस्थिति है, किस तरह से काम करेंगे वहाँ पे? मतलब जो एक फावड़ा लेके जाएंगे छोटा सा, जिसके लिए एक ठेली की जरूरत पड़ेगी। ठेली के उससे मतलब तसले में रख के उसका मिट्टी आएगी बाहर निकालने के लिए। कितना बड़ा तसला रहता होगा वो, कोई आइडिया है क्या? 14 इंच का। 14 इंच का? हाँ जी, 12 इंच का चलेगा। अच्छा, मतलब 800 का लाइन है। हाँ। इसलिए कोई बड़ा पाइप होता तो मतलब बड़ा तसला ले जा सकते। तो एक बार में कितना मलबा तकरीबन आप उसमें रख पाएंगे, कोई आइडिया है अभी? एक तसले में 6-7 किलो बनेगा। और कितना बनेगा? 6-7 किलो। 6 लोगों की टीम जो जा रही है वो किस तरह से काम करेंगे? वो क्या शिफ्ट में काम होगा? कौन तोड़ेगा, कौन मलबे को खींचेगा? इसमें 2 आदमी हम पहले जाएंगे, जो तसला भर के ट्रॉली पे रखेंगे। ठीक है। बाकी 4 जने खींचेंगे। अच्छा। वो थकेंगे, फिर हम लोग 2 जाएंगे, अल्टरनेट करके जाएंगे। शिफ्ट में काम? हाँ, शिफ्ट में काम करेंगे। Equipped with hand tools, the rat miners burrowing through a 2.5-foot pipe, thrusting into the debris, clearing the rubble manually. This comes after delays caused by mechanical drilling snags in the Uttarkashi tunnel. Employing multiple strategies simultaneously to safely extract the workers in the final but critical stage of the rescue. With Amit Bharadwaj and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today. And of course, for the families, as I said, it's been 17 days of torture. They've prayed, they've hoped, and eventually their prayers have been answered today. Listen in to their feelings. Finally, there's a sigh of relief over here. Joydeep's mother is with us. We'll just try and, I don't think she's in a condition to speak as such, but we'll try. আপনাদেরকে কিছু জানালো যে সেফলি জয়দীপকে বের করা হয়েছে? হ্যাঁ। এখন একটু আগের থেকে বেটার লাগছে? আপনি ভালো আছেন আগের থেকে? ঠিক আছে। আপনাদের তরফ থেকে কেউ যাবে এখান থেকে উত্তরকাশী, এরকম যাওয়ার কোনো প্ল্যান কিছু আছে ম্যাডাম? আমি জানি না, আমার ওখানে মেয়ে জামাই রয়েছে। আমি তো even the MP Apurva Poddar is also here. Just we'll take a little word from her. Madam, कहीं लगता है कि और जल्द हो सकता था, लेकिन now we are happy, at least they have been rescued. All 41 workers have rescued. The mother is happy, the whole family is happy, and we have been monitoring from the very first day. Our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee have kept in touch with the family through us. Our BDOs, our officials, our party workers were in touch with the family, with both the families, and we prayed for all the 45 workers who were trapped in Uttarkashi and Silkyara. Yes, both of, yes, Shobhik Pakira and Joydeep Paramanik both have been rescued, and we are hoping for all the workers, they come out of the tunnel. We pray for everything is fine, but our mother is also fine now. So she had not taken her fruit from the whole day today. Now she had taken some sweets and water, and we are happy with both of the family. And even this is, it's a mega sigh of relief that many of the trapped workers are out, and two individuals who were stuck from Hooghly, both of them have been thankfully out. फूल तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है कि हमारे बच्चे निकल के सभी चल आए हैं, और मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चे सब सलामत हैं। हम लोग आज बहुत ही खुश हैं, और एक तरीके से दिवाली हमारी आज है, दिवाली और छठ जो कि फीका गया था, आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दीपक और दिए जलाए जा रहे हैं। किस तरीके से स्वागत करेंगे आप?
फूल माला के साथ बाजे गाजे के साथ स्वागत किया जाएगा। और अब दिवाली मनेगी आप? दिवाली मन रही, देख रहे हैं कि मोमबत्ती और दिए जो कि जलाए जा रहे हैं और आप हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे परिवार और पूरे गांव के लिए खुशी का माहौल है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा लड़का सुरक्षित निकल गया। बहुत खुश है। हाँ। एक्सक्लूसिव बातचीत। विशाल, क्या कहना चाहेंगे बाहर आने के बाद, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। विशाल, अंदर की स्थिति कैसी थी? ठीक थी सर, ठीक थी, ज्यादा वो नहीं थी। खाना वगैरह आप लोगों को मिल रहा था? हाँ जी, बराबर मिल रहा था खाना। अभी एनडीआरएफ की टीम अंदर गई तो कैसे आप लोगों को निकाला गया? सर पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ निकाला गया सर। आप स्वस्थ हैं विशाल? आज तक को बताइए, आप स्वस्थ हैं? पूरा देश आपको सुन रहा है। हाँ जी सर, पूरे स्वस्थ हैं। आपके बाकी साथी जो हैं 41 साथी, उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे? सर सारे स्वस्थ हैं, सबको खाना पीना ऑक्सीजन बराबर मिल रही थी, सब स्वस्थ हैं सर। कहीं कोई इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मुश्किल घड़ी अगर कुछ बताना चाहेंगे विशाल, जो सबसे मुश्किल रहा? सर स्टार्टिंग का दिन था पहला, जिस दिन ऑक्सीजन नहीं थी, कोई वो नहीं था, वार्तालाप नहीं था, वो दिन था पहला सर। उसके बाद जब हमारी बातचीत हुई उसके बाद सब ठीक था सर। अच्छा, बीच में ऐसा लगा कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा मशीन से ही, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो उस वक्त क्या हिम्मत टूट रही थी? ना सर, अब आज बातचीत हो रही थी ना सर, कम्युनिकेशन था अंदर बाहर से, तो बातचीत हो रही थी डेली सर। जी। एक और सवाल मैं बस पूछूंगा आपसे कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से लगातार लोग आ रहे थे, मुख्यमंत्री खुद बात कर रहे थे, आपके परिवार वाले बात कर रहे थे, तो सबसे मुश्किल घड़ी क्या लगती थी? उम्मीद बनी हुई थी आप लोगों की? हाँ जी सर, उम्मीद बनी हुई थी सर, सबकी उम्मीद बनी हुई थी। अब अपने घर वालों से मिलके सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप जब मिलेंगे? सर मिल गए सर, घर वालों मिल लिए क्या? कैसा है वो पल? अभी मुलाकात कैसी रही आपकी? सर बहुत बढ़िया रही सर, क्या बोले सर अब हम। ठीक है। This rescue effort has done is shown what happens when you are united. All the governments have worked together, from the Uttarakhand government to the central government to the Delhi government to the UP government to the West Bengal government. Some of them belong to different parties, but the officers all belong to India. They've come from different communities. You can just read the names and you will know. The heads of organizations, DG NDRF Kharwal, Lieutenant General Harpal Singh, Syriac Joseph, and you've got Sayyid Atta Hasnain, all of whom have been involved, leading their men, and those on the ground have worked together as one. This is what unity of purpose does. There were miners who belonged to every community, and they were rescued by people who belong to every caste and community, and they are all united in one effort to ensure that the miners came back safely. And it's not just people from within this country, people from outside. International experts have also helped. Arnold Dix, who is the head of the Geneva-based International Tunneling and Underground Space Association, is the person that every Indian today wants to thank. Dix is a tunneling expert, and the Uttarkashi rescue mission was guided by him. He was there hour after hour monitoring it. His expertise was one reason we could achieve this success in such a short, relatively short period of time. Take a look at the role that Dix played. Arnold Dix, the tunneling expert, we have much to thank for. The Uttarkashi rescue mission was guided by Dix, who was roped in by the government, which pulled out all the stops to rescue the 41 workers trapped inside the Silkyara tunnel. Dix, who heads the Geneva-based International Tunneling and Underground Space Association, is an expert on underground construction. As rescue operations neared completion, Dix expressed his happiness. We're doing everything we can. 41 men home safe, no one hurt. And I'm feeling good. We've been positive before. Yes. And I'm positive today. And that's the only reason. And today is the first day I said, I feel good. Yeah, you feel I've good. never said I feel good before. In his career that spans over 3 decades, Dix has played many roles, mainly revolving around underground safety. Dix wears multiple hats. He's a geologist, engineer and lawyer. He has science and law degrees from Monash University in Melbourne, and his website describes him as an accomplished lawyer. Arnold Dix was Tuesday seen with a priest offering prayers at the temporary temple set up outside the tunnel. He had earlier promised to get the trapped workers home by Christmas.
that they'll be home in time for Christmas. And as you know, I'm the only one who's talked like this. In the beginning, I never promised it would be quick. I never promised it would be easy. Always I said, we will see, but they'll be home for Christmas and they'll be safe. As the rescue operation succeeds and the trapped workers walk out, remember, Arnold Dix's expertise was one reason we could do so. Bureau Report, India Today. Christmas has come early then for Arnold Dix. Diwali has come late for the families of the miners, but we want to wish them even today, Shubh Deepavali. Today is a day they can celebrate with their loved ones. Just think about the agony that they've gone through over the last 17 days. This is a moment, therefore, for all of us to celebrate as Indians. When we are united, when we rise above all divides with unity of purpose, no one can stop us. And that is the unity that has been shown by the multiple agencies and individuals who worked tirelessly over the last 17 days with one mission in mind: to rescue their fellow Indian citizens. It's therefore a moment to feel relief, to celebrate, but also a reminder that we need better safety standards, particularly when we are doing these tunnels through ecological zones of the Himalayas. We need those safety audits so that incidents like this are never repeated again. I want to leave you with images now from the hospitals. All the workers being taken for checkups to the ambulances. None of them, we are told, are in danger, but all of them have gone through immense trauma. They need our support. We hope that they will get to spend the remaining month or the remaining part of 2023 with their families. And we once again, on behalf of all our citizens, want to pay immense gratitude to those involved in the rescue efforts. Without their tireless efforts, burrowing step by step, meter by meter, we would not have seen this day. Our thoughts, therefore, with the families, with the rescuers, and indeed with humanity. Thanks for watching.